Good morning, everyone. I hope you are fine. Now again we are here for our next class. Then unit is going on laws of motion. Okay. Now we are starting our next class, beta, for the laws of motion. We discussed in last class about the force. Then today we will discuss about the laws of motion. Then in last class we discussed about their force and linear momentum and their force we have discussed. Now today we will discuss about the laws of motion. There is a 3 laws of motion that are given by the Newton only. Then first law is our Newton, that is Newton first law. What is Newton? That is given by this one Newton, told about this one, that Aristotle observed that force is mandatory to keep an object in a uniform motion is our wrong. Okay, that is force is required to keep the opposing force, that is your friction only. Okay, not only that is a force is mandatory for uniform motion, but there need some another force that is known as the force of the friction. Okay, so Galileo came to conclusion about the law of inertia with help of the simple observation on the motion that object on the inclined plane, and the statement is a Newton, this one statement. Okay, this one statement again given by the Newton in with complete explanation, that is everybody continue to be in state of the rest only. Okay, so of the uniform motion until and unless external force act on this, means if external force will be 0, then body will be in same state only. If we will apply some force, then only body will be changed. Means if our external force, according to Newton force law, if we can say if external force will be equal to 0, then body will be in same state. Body will be in same state. Same state means we can say that body is at rest, then body will be rest only. If body is moving in uniform motion, then it will be remaining uniform motion only. Okay, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे तब तक बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही मूव करती रहेगी. दैट इज गिवन बाय द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. ओके, उससे पहले क्या था बताया गया था, एरिस्टोटल ने इसके बारे में डिस्कवरी की गई थी. उसने कहा था दैट इज अ मैंडेटरी, कि एक फोर्स मैंडेटरी होता है कि बॉडी को यूनिफॉर्म में मूव करवाने के लिए, बट इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट. तो उसके बाद क्या था, उसने कहा था इसको कॉन्टिन्यूसली कीप मोशन में रखने के लिए नीड ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की नीड पड़ती है, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी. यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी क्या है, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स भी क्या कर सकती, मूव कर सकती. जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे इट विल बी रिमेन मूविंग ओनली. दैट इज गिवन बाय द न्यूटन. ओके, सो दिस वन इज अ फर्स्ट लॉ ऑफ द न्यूटन टॉकिंग अबाउट द फोर्स. अगर फोर्स नहीं अप्लाई करे तब तक क्या रहेगी, सेम स्टेट रहेगी. एंड this one law is also known as the law of inertia. What? Law of inertia. Okay, first law we can call it law of inertia. Now second law. What is second law? Second law is a net force produced by the object is directly proportional to the rate of change of momentum of a body, and change in momentum take place in the direction of the applied force. We discussed in last class beta, force is our what? Force is your vector quantity having direction as well as the magnitude. Okay, vector we can say that it is having magnitude plus your direction. तो फोर्स भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है. तो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन एज अ रियल लॉ ऑफ द न्यूटन, जो आपका फोर्स को डिफाइन करता है. और एग्जांपल हियर, फोर्स इज देयर बेटा, 1 on the horse, then 20 Newton applied in this direction and 30 Newton is applied force in this direction. Then how you can force, total force how we can find, depend upon the direction. कि हमारा फोर्स क्या है, डिपेंड करता है, जो रिजल्टेंट जो फोर्स आता है उसको फाइंड करने के लिए मैटर करता है कि फोर्स किस किस डायरेक्शन में लग रहा है. क्लियर? अगर आपको डायरेक्शन गिवन नहीं है तो रिजल्टेंट वी कैन फाइंड आउट.
Okay, if both are acting 20 and 30, both are acting in one direction, रिजल्टेंट आप फोर्स निकालोगे तो कैसे करेंगे, F1 प्लस F2, यस और नो। अगर दोनों फोर्स क्या डिफरेंट डायरेक्शन में लग रही है, बोथ फोर्स आर डिफरेंट डायरेक्शन, देन वी कैन से F माइनस यर F2 इन अपोजिट डायरेक्शन। मीन्स हमारा जो रिजल्टेंट है वो मैटर करता है, बोथ फोर्सेस आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन। रिजल्टेंट हम तभी निकाल सकते हैं दैट एज वी नो अबाउट द डायरेक्शन, विदाउट डायरेक्शन वी कांट फाइंड इट। ओके, सो अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना है, दैट इज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो हाउ वी कैन फाइंड दिस वन फोर्स, लेट अ बॉडी वी आर टेकिंग whose mass is m we are taking, okay, that is moving in this one direction, and after some time it will reach here on this one position. Okay, if this one body is having initial velocity u we are taking, then after some time its velocity, let we are taking t time, within t time its velocity becomes v. Okay, so here we are writing beta, let an object of mass m is moving initially with velocity u, then after some time not t we are taking na here, after t time we have taken, after t time velocity becomes v. Okay, finally velocity becomes v of this one. Clear? Initially we are taking beta, there is a m is a mass we have taken, u is a initial velocity moving from here to there, then its velocity becomes v within t time. So how much force will be exerted externally, then this one force, how we can write there, this force according to this one, net force produced by the object is directly proportional to the rate of change of momentum. Okay, so we can write there directly proportional to the rate of change of momentum. If initially on this one position momentum is P1 and after this one finally its momentum become P2, then how much change in your momentum, final momentum minus initial momentum, like this one we can write, and this one change will be within your t time. Okay, so as we will change this one proportional sign, then write a constant k, then we can write there P2 minus P1 divided by your t only. Okay, so here this one k we will write there, here we will write k equal to constant we are taking 1 only. Okay, remove this one constant, then here we can write there f is directly proportional to this k change in momentum P2 minus P1 divided by your t only. Okay, so here remove this proportional, as remove this one, then constant we have taken, then here constant value we will take there 1. Okay, here this one value k we are taking equal to your 1 only. Clear? So as we will keep 1, then here we can write there final momentum minus your initial momentum divided by your t only. Clear? So as we know here we have discussed beta about the momentum, then momentum p is equal to product of mass and the velocity. So as we are putting here, then P2 is our final velocity. Okay, P2 is our final momentum, so P2 is final, then we can write their mass will be remain same, but its velocity finally become v only. Okay, same for the linear momentum for initial point, then mass will be m we have taken of the body, but initial velocity we have assumed there u only. Yes na, see here in our initially mass is m, initial velocity is u only, so initial momentum p1 equal to m u. आफ्टर दैट वेलोसिटी बिकम्स v, कुछ टाइम के बाद क्या हो जाती है, वेलोसिटी v हो जाती है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगी इस पॉइंट पे, p2 इज इक्वल टू योर मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑन दैट पॉइंट, दैट इज v. Okay, so we are applying this one
Now, as we will apply here, then m we can write there, then m v minus your u divided by your t only. Okay, so here we can write there m v minus m u divided by your t. Understood or not? Okay, so this one here simple method where till 9th class we have discussed about, but this one in 11th class we will do with help of the calculus method. Okay, this one change in momentum per unit time, this one we can write there in form of the calculus method by using calculus method. We will use integration and differentiation. By using this one, we can write there f is directly proportional to the rate of change of momentum. Like this one we will write. Okay, initially having your body of mass is m and velocity is v, then after some time then velocity becomes v. Then on this one initial momentum p1, initial final momentum is p2. Clear? So there is a small change in momentum within small time, that is equal to your external force. Here this one here external force. So remove this proportional sign, then we can write there this one will be equal to your k constant, and this one value of this constant we will keep k equal to your 1 only. Okay, as we are taking 1, then here we can write there f equal to dp by dt. Understood? So as we know about this one, P is equal to your mv, mass into velocity. So as we are putting this one d mv your dt. Here two conditions are there, beta. If mass will be constant, then we can write their mass outside of this one. Plus, if velocity will be constant, then here will be your dm by dt. Okay, this one will be our force only. So if m is constant, m is mass is constant, mass m is constant. So we know about this one here, constant differentiation always will be 0. Okay, so mass constant, so this one ratio, this one term will be equal to 0. So here left here, f is equal to your m dv by dt. What? M dv by dt. Okay, so dv by dt change in velocity per unit time, we can say m equal to a, that is instantaneous acceleration, small change in the velocity within small time. Okay, from here to there is a small change in velocity in your small time dt, then force we can write their mass into acceleration. This mass into acceleration will be there if your mass will be constant. This mass will be constant, then your force we can write there f equal to ma. But this one condition f equal to this one, another one f equal to v dm by dt. But this one case will be applicable if mass is not constant, but velocity is your constant, you can say uniform motion. Clear? So this one constant will be there, then force we can write there this one. We can say example of this one, rocket propulsion. This is the example of the that in that case जब हम रॉकेट रिलीज करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है बेटा, मास रिलीज होता है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. ड्यू टू दैट केस मास विल बी डिक्रीज, एंड डिक्रीज ऑफ मास देन वी विल यूज दिस वन केस. Clear? But mostly we are using this only beta. Most of questions, most of problem, then we are taking mass as a constant quantity. अगर mass constant रहेगा then force will be act there ma. So don't call it force equal to ma. Force will be our exact definition of force will be change in momentum per unit time. Okay, after this one it is a depend your mass is constant or not. If your mass will be constant, then we can write there f equal to ma. If mass will be not constant, then we will apply this one condition.
Okay, I hope you understood beta about this one Newton first and second law. First law that I told you, that is a, if external force will be zero, then body will be remain at rest or moving in a uniform motion. Okay, in second law we are describing about the definition of the force, means if we will apply some external force, then there is a change in momentum. Okay, change in position, change in state of the motion of any object. So how much change? This is the change. If your mass will be constant, then it will be come out F equal to ma. Okay, applied A, अगर बॉडी यहाँ पे हॉरिजॉन्टली अगर पुट कर रहे हैं बेटा, इट विल बी नॉट शिफ्ट इटसेल्फ, अपने आप वो इधर उधर नहीं जाएगी कि हमने यहाँ बॉडी रख दी, अपने आप ये इधर उधर नहीं जाएगी. इफ यू विल अप्लाई सम फोर्स, देन इट विल गो फॉरवर्ड बैकवर्ड. ओके, अगर बॉडी आगे पीछे जा रही है तो मतलब क्या कर रही है, वो एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है. दैट्स व्हाई वी कैन राइट देयर फोर्स F equal to ma. Clear to everyone? So next one, your Newton's third law. Okay, Newton's third law क्या कहता है, that to every action there is equal and opposite reaction. Clear? To each and every action there is equal and opposite reaction. So what is the meaning of this one? कि for example see your picture. Picture के अंदर क्या है, गन से क्या बुलेट फायर कर रहे हैं. क्लियर, हम क्या एक्शन करें, बुलेट फायर कर रहे हैं, तो बुलेट क्या करेगी, आगे की तरफ जाएगी और ये गन क्या करेगी, पीछे की तरफ जाएगी. मतलब एक्शन क्या हुआ, बुलेट इज मूविंग फॉरवर्ड डायरेक्शन. रिएक्शन क्या मिला, जैसे बुलेट फायर की रिएक्शन क्या किया, बुलेट इज गोइंग फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज एक्शन. और रिएक्शन क्या हुआ, वी विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, कि हमें पुश करेगी पीछे की तरफ. तो ये क्या कहता है न्यूटन थर्ड लॉ, कि हर एक जो ऑब्जेक्ट है, एवरी एक्शन, जो भी एक्शन होता है उसके साथ हमें क्या मिलता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलता है. ओके, तो इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल का मीनिंग हम किससे बात कर रहे हैं, उसके मैग्नीट्यूड से हम बात कर रहे हैं. उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, कि जितना फोर्स आगे की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स हमारा पीछे की तरफ लगेगा. क्लियर. और अपोजिट का मीनिंग क्या है, दैट इज टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन. जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, रिएक्शन हमारा क्या हो रहा है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है. सो वी कैन से एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर एक्टिंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अब यहाँ पे ये होगा दैट बुलेट इज फायरिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट बुलेट क्या है, इतनी तेज स्पीड से जा रही है, बट वी आर दैट गन इज नॉट बैकिंग इन सेम डायरेक्शन बट विद द नॉट सेम स्पीड. जो बुलेट है हमारी वो सेम स्पीड के साथ पीछे नहीं जा रही, बट यार आपकी क्या है, बुलेट तो आगे तेजी से जा रही है, बट क्या है, गन धीरे जा रही. तो उसका रीजन क्या रहेगा, मास ऑफ दिस वन, मास ऑफ गन इज लेस देन मास ऑफ बुलेट. ओके, दोनों का मास क्या है, सेम नहीं है, मास वेरी कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है, आपको अपोजिट इक्वल अमाउंट में मैग्नीट्यूड नहीं मिल रहा. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल यू आर सिटिंग ऑन द बेंच. Why? Because of the Newton third law. Newton third law क्या कहते हैं, जितना फोर्स आपकी बॉडी बेंच के ऊपर लगा रही है, उतना ही फोर्स क्या लगा रहा है, बेंच आपको ऊपर की तरफ लगा रहा है. That's why you are capable, you can sit on the benches. Understood or not? Okay, you are standing on the surface. Why? Because of Newton third law. कि आप अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहे हो. ओके, आपको रिएक्शन क्या मिल रहा है, यू आर डूइंग एक्शन, यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन द अर्थ, बट आपको एक्शन क्या मिल रहा है, रिएक्शन क्या मिल रहा है, कि अर्थ आपको डबल फोर्स लगा रही है. अंडरस्टूड और नॉट? सो दिस वन योर न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू ईच एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. कि आपको इक्वल और अपोजिट रिएक्शन मिल रहा है, कि हर एक जगह पे बेटा न्यूटन थर्ड लॉ वी आर अप्लाइंग देयर. फॉर एग्जांपल हियर दैट बॉय इज जंपिंग फ्रॉम द बोट. बॉय क्या है, बोट से जंप कर रहा है, उसका मीनिंग क्या है, आपका एक्शन क्या हो रहा है, बॉय फिट एक्सर्ट फोर्स ऑन दी बोट. बॉय के जो फिट है वो बोट पे फोर्स लगा रहे हैं, और बोट जो है वो एक्सर्ट कर रही है फोर्स ऑन दी फिट. ओके, कि जैसे ही हम बोट से जंप लगाते हैं तो हमारे जो फिट है वो फोर्स अप्लाई करेंगे बोट के ऊपर, बोट क्या करेगी, पीछे की तरफ जाएगी, और बोट क्या है, उनके पैरों पे फोर्स लगाएगी, दैट यू विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यू कैन जंप फॉरवर्ड डायरेक्शन. ओके, सो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, हर एक एक्शन का क्या है, हमें इक्वल और अपोजिट रिएक्शन मिलता है. इफ वी विल डू सम एक्शन देन रिएक्शन आल्सो विल बी देयर. सो लेट अ बॉडी बी एक्सर्टिंग फोर्स F ऑन अ बॉडी B.
कि एक कोई ए बॉडी है, बी बॉडी पे फोर्स लगाएगी, देन बी बॉडी भी क्या है, ए बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगी, सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड विल बी एफ ओनली, बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट। यहाँ नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, देयर डायरेक्शन ऑफ बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट विल बी अपोजिट। सो हियर वी कैन राइट देयर एफ ए माइनस एफ बी, कि अगर F ने क्या है, ये ऑब्जेक्ट A है, ये ऑब्जेक्ट B है, A B के ऊपर फोर्स लगाएगा तो B भी क्या है, A के ऊपर फोर्स लगाएगा। सेम अमाउंट में, ये बोथ आर सेम मासेस, देन सेम अमाउंट में फोर्स लगेगा, बट डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट डायरेक्शन रहेगी, दैट इज यू कैन से नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन बिकॉज फोर्स इज आवर वेक्टर क्वांटिटी. Okay, so today we will discuss beta Newton's 3 laws, then in next class we will do in our next topic. So thank you for watching today our video.